Perfect. Thank you very much, dear students, for joining me again. Gradient tool is the one we are going to discuss in our this session. अच्छा, gradient tool किस लिए use होता है? When you are using multiple colors, more than one colors, two plus any other, मतलब two plus n means two plus one, two plus two, two plus three, जितने ज़्यादा different type of colors आप इस्तेमाल करना चाहें, you can. So, uh, okay, Vajiha, I have done it. Every lecture is almost available on the internet. You please go to Institute of Freelancing के उस पे जाएं and you find out almost every lecture. So let's get started our the session. Okay, so gradient tool basically क्या करता है? As I was telling you earlier, so let me first hide this thing. Okay, and let's take a basic background. Basic background means nothing. This is just a background के ऊपर. Now let's suppose if you want to, we have already selected two different colors. One is this red color. Okay, the second color, let's suppose हम अपनी मर्जी से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये वाला कर लें so that a prominent color हो जाए. These two colors, and let's pick this gradient. As soon as you pick this gradient color, there are multiple options. First, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिकली कोई भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इरेज, फॉर एग्जांपल स्टैम्प, फॉर एग्जांपल ये आने वाले कुछ टूल्स हैं, सॉरी टेक्स्ट टूल में देखें फॉन्ट, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द ग्रेडियंट टूल. ग्रेडियंट टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस प्रॉपर्टीज के पैनल्स में वो आपको दे देता है, जिनमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दीज टू, फर्स्ट एंड सेकंड वन. The second one is like किस तरह का gradient आप लगाना चाह रहे हैं. That is linear means line में एक gradient हो. Radial means circular. This is kind of क्या से कहते हैं. The third one is angle gradient means इसमें एक side से वो probably angle होता है. Then probably reflected gradient or diamond gradient. So let's suppose हम एक एक करके सारी की सारी examples को click करते हैं. So linear gradient हम सबसे पहले select किया हमने, and let's go to this option first. You will find multiple options. First option वो वाली है, ये देखें जो आपने select की थी colors. Okay, so that's why I choose two different colors. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाके फौरन से पहले इसको करता हूँ, मैं विदाउट सेलेक्टिंग ग्रेडियंट टूल में जाके इसको करता हूँ आइदर डी फॉर डिफॉल्ट कलर्स, एंड उसके बाद मैं जाके जी इज फॉर ग्रेडियंट, जी पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा यू फाइंड आउट ब्लैक एंड व्हाइट. ओके, ब्लैक एंड व्हाइट. सो यू हैव योर ओन चॉइस. अगर आप इस तरह चाहते हैं फर्स्ट अपनी मर्जी से कलर चॉइस करना, सो यू कैन डू इट. ओके, फर्स्ट सेलेक्ट रेड, then we selected probably yellow या कुछ इस तरह का हमने select किया था, and then you click on gradient, and gradient से जाके जैसे ही आप click करेंगे, that is the one which you have to select it first. So इस पे click किया, यहाँ पे आए, now you have two choices. Linear means line gradient यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन at the background layer. Very important to understand कि आप किस layer के ऊपर ये प्लेस करना चाह रही हैं. राइट नाउ यू हैव प्लेस दिस ऑन अ ग्रेडियंट, सॉरी ऑन द बैकग्राउंड gradient layer applied on the background layer. And now once you open this gradient, you find out, have a look at this one, कि ये already selected text हमारे पास red color में था. So red color के ऊपर when it comes to the same red, तो वो ये वाली almost जगह है, इसके ऊपर बिल्कुल ये नजर नहीं आ रहा. Okay, so let me, अभी क्योंकि हम इसको हम डिस्कस नहीं करें, we are just discussing this thing. So let's undo this. मैं white के ऊपर background के ऊपर कुछ apply नहीं कर रहा. I'm going to create a new layer to give you further one more experiment या experience. First thing is the background के ऊपर भी आप apply कर सकते हैं, लेकिन ideally speaking the background layer is for a specific purpose, so it's better to retain it as a standard white color. Okay, so let's go to layer number one, create gradient layer पे click करें, G with the press of G, and यहाँ से आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, इनमें से there are so many list, और इसके अलावा भी इस एरो पे क्लिक करें, you find out there are so many spectrum, अपेंड कर दें, एंड यू फाइंड आउट कि इसी के अंदर फिर कितनी सारी और ऑप्शंस भी आपके सामने आ जाएंगे. आई एम सॉरी, दरमियान में स्टूडेंट्स हरीम इज एक्चुअली एंटरिंग. ओके, सो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करूंगा और यहाँ से जाके इसमें स्पेशल इफेक्ट्स को अपेंड कर दूंगा.
हेयर इज द स्पेशल इफेक्ट्स जो कि इसमें प्रोबेबली पहले भी थे। ओके, एंड देन उसके बाद मेटल्स के इफेक्ट्स को मैं अपेंड करूंगा। ओके करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ वो रह जाएंगे। लेकिन अपेंड मीन्स के ऑलरेडी मेटल के इफेक्ट्स इसमें, ये जो ऑलरेडी हमारी लिस्ट बनी हुई है इसमें ऐड ऑन कर दें। सो हेयर वी गो दी मेटल वंस, ठीक है ना। सो आप पिक करें दिस वन स्टील वाला कलर्स, और यहाँ पे आके इसको दोबारा क्लिक करें इस एरो पे, सो दैट कि यहाँ से इधर हो जाए, यहाँ से क्लिक करें इधर, एंड हैव अ लुक एट दिस वन। अब जिस साइड पे आप एरो को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, इस एंगल से इस एंगल, जिस भी एंगल पे आप लगाना चाह रहे हैं, इस एंगल से इस एंगल तक, जिस तरह आप लगाना चाह रहे हैं, दैट वुड हैव बीन अप्लाइड। But again, we have selected black and white, so the color would be black and white. So instead of going for first one, let's go to this again first one, और first one से जाके मैं Ctrl+0 पहले करता हूँ, so that कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक सारा सामने मेरे आ जाए। So मैं straight away जाके इसको यूं place कर देता हूँ, and here it is the two colors linear gradient. How are you making the arrow? Javeria and surprise, where can you see the arrow? I can't see, the arrow. That is actually, this is the arrow you're talking about. I don't know from where you got this arrow. I can't see that arrow anywhere. मैं बना भी नहीं रहा. The line actually, it is the line, it is just the line कि रेड कलर से लेकर येलो कलर, इट इज जस्ट मैं यहाँ से ड्रैग करके माउस को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। ओके, लेट्स सपोज ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। अब वो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेड, एंड ये येलो का, दैट्स द एंडिंग पॉइंट। ओके, if I'm interested to let's create a new layer, and same thing I'm trying to apply it on the, instead of linear I'm going for this circular। सर्कुलर पे कैसे वो काम करता है, आप यहां से स्टार्ट करें तो दैट बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल, that is a problematic। So let's start from here in the center and इसे ड्रैग करके किसी एक कॉर्नर की तरफ ले आए। You find out the center is now red, the corners, everywhere the corners are getting reddish, the center is only red। So let's take another experiment on layer number 3। मैं एक एक करके लेयर को ऐड करता जा रहा हूँ, and start up with this third option, and that is angle। angle gradient क्या करता है, आप यहाँ से यहाँ पे आए, सेंटर से एक एंगल की तरफ, एंड जिस जो लाइन आप क्रिएट करेंगे दैट लाइन विल बिकम कंट्रोल जीरो, दैट विल बिकम द एंगल। ओके, मैं यहाँ से अगेन स्टार्ट करता हूँ, या मैं चले यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता हूँ, तो मेरा ये एंगल इसके ऊपर हो जाएगा। सो दैट इज दिस एंडिंग पॉइंट एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सर्कुलर शेप। Okay, the third one is option is exactly as I told you earlier, that is the reflected from start till end, यहाँ तक यूं जाएंगे, and that is of course बड़ा simple, लेकिन दो के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं हो। Okay, this last option is the diamond one। diamond exactly क्या करेगा, squarish इस तरह वाली शेप में आपको ये डिफरेंट बना देगा। लेकिन the idea is not this, यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होती, यहाँ से एक्चुअली ये चीज शुरू होती है। We are trying to make it like multicolor like this one, जिसमें starting from green से it is towards the, no, it is purple से dark कुछ something color, and then to the green, and then to करते करते ये इसकी तरफ आ रहा है। So let's see, इसको हमने select किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक, sorry हमने गलत select किया हुआ था, that is the one we have to select, and have a look at this one। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक्चुअली ये मल्टीपल कलर्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप इसमें से सेंटर वाले को पिक करें, सर्कुलर वाले को, और सेंटर से कॉर्नर तक लेके आए, एंड हैव अ लुक एट दिस वन। दरमियान में ये वाला पर्पल, एंड देन उसके बाद ग्रीनिश, एंड देन उसके बाद ये वाला कलर, एंड दिस इज सो अमेजिंग। यू कांट सेलेक्ट मल्टी कलर्स फॉर योर ओन चॉइस, इंटरेस्टिंग। आप जल्दी जा रही हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको वहां पे लेके आना चाह रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ चीज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। ओके, सो लेट्स मी डू दिस वन फर्स्ट, गो टू दिस वन, देन गो टू दिस वन, एंड इस पे जाने के बाद मैं इसके ऊपर इंस्टेड ऑफ क्लिक, डबल क्लिक
या सिंगल क्लिक इसके ऊपर करेंगे, ये आपको फर्दर ऑप्शन दे देगा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर इंस्टेड ऑफ एरो मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी ग्रेडियंट एडिटर पे आ जाएगा। ग्रेडियंट एडिटर इज डूइंग व्हाट, आपको ये ऑप्शन दे रहा है, चॉइस दे रहा है कि दैट इज द रेड कलर, इंस्टेड ऑफ रेड आप इसको उठा के मोर डार्क कर दें। आप येलो को पिक करके यहाँ से, सॉरी दिस इज नॉट द येलो वन, दैट्स दैट्स द येलो वन, ओके दैट्स द येलो वन, और आप इसको उठा के ब्लूइश कर दें यहाँ पे। ओके ये क्यों नहीं कर रहा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अच्छा, so that means okay, right, and have a look at this one, dark say more dark, okay, and now this the new gradient color has scheme has been selected, so click on this and have a look at this one. अब मैं चाहता हूँ कि नो 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 ये थोड़ा सा इन्वर्स करना है, इन्वर्स करना है, या इधर सेलेक्ट दिस रिवर्स, आप दोबारा यहाँ से यहाँ लगाएं एंड यू फाइंड आउट द रिवर्स कीज, डार्क इस तरफ और रेड इस तरफ, या इफ यू आर इंटरेस्टेड नो रिवर्स ना हो लेकिन आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस वन, इस पे इसको केयरफुली सेलेक्ट करें एंड यहाँ से इसका कलर को उठा के थोड़ा सा ये वाला कर दें, ओके, नाउ डार्क टू राइट लाइट कलर हो गया, ओके, सो अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएं, so that will give you exactly the same color which you are interested. So now if you open up your gradient tool, text on it, have a look at this one. अब ये gradient tool की right click and blending options पे जाके आप इसके ऊपर stroke apply करें and I would say कि इसको whitish कर दें and इसी के अंदर something like gradient overlay इसके अंदर भी apply करें। So you will find out कि gradient के अंदर gradient लगता जा रहा है, ठीक है। अब आप instead of yes choice this go for this one, ये इसके बजाय ये वाले पे चले जाएं, इसके बजाय ये वाले पे चले जाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, now you have the choice. Thank you very much, dear students, for joining me today's session. It was indeed a great pleasure to teach you. अगर आपको किसी किस्म का कोई issue, problem आए इन दो specific tools में, do let me know. And I'm very much excited, super duper excited. लेकिन एक गिला है आपसे तमाम लोगों से कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। That is, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली सेंडिंग मी द फीडबैक आल्सो, एंड आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट कि आप लोग अमेजिंग काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मिस जवेरिया ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी, इंडीड a great personality, मतलब the aptitude of doing work is the personality, correct? So I'm very grateful to, there are so many long list, I have a long list जिनमें से कोई भी आप choose कर सकते हैं,